Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible. Walaikum assalam. Screen नजर आ रही है भाई? Can you see the question? Workbook 3 it is. Page number 15. Workbook 3 पेज नंबर 15. Alright, perfect. ठीक है. अच्छा मैं शायद चैट पे ज़रा अवेलेबल ना हूँ क्योंकि मैं आंसर्स लिख रहा हूँगा तो आप लोग भी साथ हैं और चैट पे कम ध्यान दीजिएगा. We are here for the past papers. ठीक है. So for all those who know me and those who don't know me, my name is Sir Hamza and I am the your teacher for today's past paper session, right? तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत सारे past papers करना है in the given time. All right, चले let's start. Page number 15 है. Page number 15 workbook 3. ठीक है. We'll go for the past papers. आ जाए जरा शुरू हो जाए. Explain why Ayub Khan came to power. Explain why अयूब खान केम टू पावर. तो अयूब खान जो है वो पावर में क्यों आए थे? एक्सप्लेन व्हाई अयूब खान केम टू पावर. तो अयूब खान जो है वो पावर में क्यों आए थे? आ जाए जरा सवाल पे आ जाए भाई. अयूब खान जो है वो पावर में क्यों आए थे? एक्सप्लेन व्हाई अयूब खान केम टू पावर. तो अयूब खान पावर में क्यों आए थे इसके ऊपर एक 7 मार्क का क्वेश्चन आया और हमें तीन बेसिक रीजन बताने हैं. तीन बेसिक हो जाए या एडवांस रीजन हो जाए, एनीथिंग विल डू द जॉब. अयूब खान पावर में क्यों आए थे? अयूब खान पावर में इसलिए आए थे क्योंकि नंबर वन सिकंदर मिर्जा ने इनको बोला था कि वो कंट्री में आकर क्या लगा देंगे. उनको सिकंदर मिर्जा ने आके बोला था कि वो कंट्री में लगा दें मार्शल लॉ. वो कंट्री में क्या लगा दें? मार्शल लॉ. नंबर टू हम ये भी कह सकते हैं कि अयूब खान जो है वो पावर में क्यों आए थे उसका रीजन ये भी था क्योंकि बहुत सारे गवर्नर्स चेंज हो रहे थे, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे. अयूब खान इसलिए भी पावर में आए थे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, लीडर्स लेजी थे, लीडर्स करप्ट थे, इनएक्सपीरियंस थे. तो अयूब खान पावर में क्यों आए थे जरा इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं. अल्लाह रहीम एंड करीम. मैं वर्बली बोल भी रहूंगा, मैं लिख भी रहूंगा, आप स्क्रीन भी देख सकते हैं और आप सुनते भी रहे. ऑलराइट, आ जाए. तो अयूब खान पावर में क्यों आए थे जरा वन बाय वन शुरू हो जाते हैं. अयूब खान पावर में आए थे फॉर मेनी रीजंस. अयूब खान पावर में आए थे फॉर मेनी रीजंस. लिखे अपने पास. देखिए अयूब खान केम टू पावर. अयूब खान केम टू पावर ड्यू टू मेनी रीजंस. अयूब खान केम टू पावर ड्यू टू many reasons. Ayub Khan came to power due to many reasons. Full stop. Due to many, I think go on again. Yo. Due to many reasons. तो अयूब खान पावर में आए थे ड्यू टू व्हाट मेनी रीजंस. आ जाए. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल many prime ministers many prime ministers were changing uncles as well as I think as well as governors as well as governors. Many prime ministers were changing as well as governors. Full stop. As well as governors. As well as governors. Full stop. There were floods in Pakistan as well as droughts. There were floods in Pakistan as well as droughts. There were floods in Pakistan as well as droughts. Full stop. Ahmadis were declared
as non-Muslims. Ahmadis were declared as non-Muslims. Ahmadis were declared as non-Muslims. Full stop. Ahmadis were declared as non-Muslims. Full stop. The law and order situation. The law and order situation got worse. The law and order. The law and order situation got worse. The law and order situation got worse. Full stop. The law and order situation got worse. Full stop. So, Iskandar Mirza invited Ayub Khan. So, Iskandar Mirza invited Ayub Khan to impose first martial law in the country. So Iskandar Mirza invited Ayub Khan to impose the first martial law in the country. So Iskandar Mirza invited Ayub Khan to impose the first martial law in the country. Full stop. नंबर 2 आ जाते हैं. इस्कंदर मिर्जा ने एक स्कीम बनाई थी. स्कीम का नाम था 1 यूनिट स्कीम. पाकिस्तान के 2 प्रोविंस होंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान. दोनों में डेवलपमेंट इक्वली होगी, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी. फिर भी ईस्ट पाकिस्तान खुश नहीं था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान खुश नहीं था. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी, इसलिए भी मार्शल लॉ लगा. लेकिन सेकेंडली 1 यूनिट स्कीम वाज इम्पोज्ड. 1 unit scheme was introduced. 1 unit scheme was introduced. Full stop. 1 unit scheme was introduced. Full stop. 1 unit scheme was introduced. Full stop. Again, according to the scheme, according to the scheme, according to the scheme, development will be done equally. Full stop. Development will be done equally. Full stop. Funds will be distributed equally. Funds will be distributed equally. Funds will be distributed equally. Full stop. But still, funds will be distributed equally, but still, funds will be distributed equally, but still, East Pakistan was not happy because they had more population, इनकी population ज़्यादा थी, because they had more population. Full stop. Because they had more population. Full stop. Because they had more population. Full stop. That is why Ayub Khan came to power. That is why Ayub Khan came to power. एक और भी रीजन हो सकता है. What else? तीसरा रीजन क्या हो सकता है? अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो तीसरे रीजन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना. पाकिस्तान अर्ली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी था. पाकिस्तान के पास इनएक्सपीरियंस लीडर थे, लिखे अपने पास. Thirdly, Pakistan was unable
to solve early problems. Pakistan was unable to solve early problems. So Pakistan early problem को solve नहीं कर पा रहा था. Pakistan was unable to solve early problems. Full stop. तो Pakistan early problem को solve नहीं कर पा रहा था. They were unable to make constitution. They were unable to make constitution. All the governors were lazy and corrupt. All the governors were lazy and corrupt. So to control situation, Ayub Khan imposed the martial law. So to control the situation, Ayub Khan imposed what? Ayub Khan imposed martial law. So to control the situation, Ayub Khan imposed martial law. Situation को control करने के लिए Ayub Khan ने country में क्या लगा दिया? Ayub Khan ने country में लगा दिया martial law. So to control the situation, Ayub Khan imposed martial law. Again, so to control the situation, Ayub Khan imposed martial law. तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अयूब खान ने कंट्री में लगा दिया. अयूब खान ने कंट्री में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया. सो टू कंट्रोल द सिचुएशन अयूब खान इम्पोज मार्शल लॉ. फुल स्टॉप. तो अयूब खान ने कंट्री में क्या लगा दिया भाई? अयूब खान ने कंट्री में लगा दिया मार्शल लॉ. काइंडली कॉपी करें प्लीज. हरी अप, जल्दी से कॉपी करें एज फास्ट एज यू कैन. Then we'll move forward. चलो जी, we'll move forward. नेक्स्ट हेडिंग पे चले जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो अगर सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई मार्शल लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, ये सेम है जो अभी हमने किया, सेम एज डन राइट नाउ. अभी जो हमने किया था ये वही है. सही है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 19 पे. आ जाए पेज नंबर 19 पे. देखिए कुछ छोटे मोटे सवाल है, हम उनको भी देख लेते हैं, हम बड़े सवाल को भी देखेंगे. पेज नंबर 19 पे इफ यू कम एंड सी, तो कुछ सवाल है. हु वाज फातिमा जिन्ना? तो फातिमा जिन्ना जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी. इनको एक टाइटल मिला था मादरे मिल्लत का. और फातिमा जिन्ना जो थी, अगर हम देखें, फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़े थे अयूब खान से. और फातिमा जिन्ना एक डेंटिस्ट भी थी. तो आए जरा लिखे अपने पास, फातिमा जिन्ना. फातिमा जिन्ना was the sister of मोहम्मद अली जिन्ना. was the sister of मोहम्मद अली जिन्ना. तो फातिमा जिन्ना जो थी वो सिस्टर थी किसके, कह रहे थे? फातिमा जिन्ना was the sister of मोहम्मद अली जिन्ना. फुल स्टॉप. She was a dentist. She was a dentist. तो भाई ये डेंटिस्ट भी थी. She was the dentist. इन्होंने अयूब खान से क्या लड़े थे? इन्होंने अयूब खान से लड़े थे इलेक्शंस. She fought elections against Ayub Khan. Against Ayub Khan. अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस हार भी गई थी. अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस क्या कर गई थी? हार गई थी. लिखिए अपने पास, अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट द इलेक्शंस. अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट द इलेक्शंस. तो वह इलेक्शंस हार चुकी थी. अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट द इलेक्शंस. फुल स्टॉप. अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट द इलेक्शंस. फुल स्टॉप. और फातिमा जिन्ना ने अयूब खान पे ब्लेम करा था कि अयूब खान ने इलेक्शन में रिगिंग की है. लेकिन फातिमा जिन्ना ब्लेम
Ayub Khan for rigging in the elections. For rigging in the elections. तो फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को ब्लेम करा था कि भैया आपने इलेक्शंस में क्या करी है, आपने इलेक्शंस पे रिगिंग करी है. फातिमा जिन्ना ब्लेम अयूब खान फॉर रिगिंग इन व्हाट, फॉर रिगिंग इन द इलेक्शंस. आगे चलते हैं. सवाल क्या था, व्हाट वर बेसिक डेमोक्रेसीज. जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी. बेसिक डेमोक्रेसीज अयूब खान ने एक इनडायरेक्ट इलेक्शन निकाला था और ये कितने टीयर सिस्टम था, 4 टीयर सिस्टम था. ऑर्डिनरी पीपल सेलेक्ट करेगा यूनियन काउंसिल को, यूनियन सेलेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा कौन से काउंसिल को, डिविजनल काउंसिल को. और इन सब लोगों ने मिलकर शो किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अयूब खान को मिला था 95% वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको फिर से बना दिया गया था. फिर से तो नहीं, क्योंकि वो पहली बार मुल्क के क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे. आगे, व्हाट वाज बेसिक डेमोक्रेसीज लेके अपने पास. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान. तो इसको इंट्रोड्यूस किया था अयूब खान ने. इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान, फुल स्टॉप. ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, लेकिन इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों थे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था. इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, फुल स्टॉप. कितने टीयर सिस्टम था भाई, ये 4 टीयर सिस्टम था. लिखे अपने पास, इट वाज अ 4 टीयर सिस्टम. लिखे अपने पास, इट वाज अ 4 टीयर सिस्टम. It was a 4 tier system. कि कौन सा टीयर सिस्टम था, इट वाज अ 4 टीयर सिस्टम, फुल स्टॉप. इट वाज अ 4 टीयर सिस्टम, फुल स्टॉप. Ordinary people will select union council, who will select district and divisional council, who will select district and divisional council, who will select district and divisional council, full stop. Who will select district and divisional council, full stop. 95% लोगों ने शो किया था, क्या शो किया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. लिखिए अपने पास, 95% people, 95% people, 95% people showed vote of confidence, vote of confidence. एंड अय्यूब बन गए थे प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 years. एंड अय्यूब बन गए थे प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 years. लिखिए अपने पास, अय्यूब became president for next 5 years. अय्यूब became president for next 5 years. तो अय्यूब बन गए थे प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 years. अय्यूब became president for next 5 years. And Ayub became president for next 5 years. आगे चलते हैं प्लीज. एक और अय्यूब खान के दौर में सवाल आया था, और उस अय्यूब खान के दौर में सवाल क्या था, उस अय्यूब खान के दौर में सवाल था, why Islamabad was chosen as the new capital of Pakistan. इस्लामाबाद जो है वो नया कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो था वो क्यों चूज हुआ था. देयर आर सो मेनी रीजंस. इस्लामाबाद कैपिटल चूज हुआ था क्योंकि वो सेंटर ऑफ पाकिस्तान था. इस्लामाबाद कैपिटल चूज हुआ था क्योंकि वो सेफ था.
वो समंदर से दूर था, वो वल्नरेबल नहीं था, वहां पे आर्मी का हेडक्वार्टर था, वहां पे अच्छा वेदर था। देर आर सो मैनी रीजंस कि इस्लामाबाद जो है उसको कैपिटल क्यों चूज किया गया था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वाई इस्लामाबाद वाज चोजन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद को चूज करने के हमें तीन रीजन बताने हैं। है तो ये हिस्ट्री का सवाल, बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो इसका आंसर हमें ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। इसका आंसर हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है? ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। व्हाई इस्लामाबाद वाज चोजन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लिखे अपने पास। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्ना selected Karachi as the capital. Jinnah selected Karachi as the capital, full stop. Jinnah selected Karachi as the capital, full stop. Karachi was located at the south of Pakistan, at the south of Pakistan, near the sea, near the sea, full stop. It was easy to attack Karachi from the sea. It was easy to attack Karachi from the sea, full stop. It was easy to attack Karachi from the sea, full stop. On the other side, Islamabad was far away from borders, and it was surrounded by mountains, So Islamabad was considered safe in comparison to Karachi. So Islamabad was considered so Islamabad was considered safe in comparison to Karachi. So Islamabad was considered as safe as comparison to Karachi. Full stop. So Islamabad was safe as compared to Karachi. Full stop. Like secondly, Ayub Khan wanted. Secondly, Ayub Khan wanted the capital to be near army's headquarters. The capital to be near army's headquarters. Full stop. Army had a headquarters in Rawalpindi, which is near Islamabad, full stop. So, for the protection point of view, point of view, Islamabad was chosen as. So, for protection point of view, Islamabad
was chosen as the capital. So for protection point of view, Islamabad was chosen as the capital. तो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में इस्लामाबाद को कैपिटल चूज किया गया था. सो फॉर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामाबाद was chosen as the capital. Full stop. Thirdly, Islamabad was a planned and a developed city, with good weather. Islamabad was a planned and a developed city with good weather, full stop. Karachi was an arid area. Karachi was an arid area, full stop. It was difficult to work in Karachi. It was difficult to work in Karachi, full stop. There were no proper ventilation system. There were no proper ventilation system. So it was difficult to run country from Karachi. That is why Islamabad was chosen as the new capital. That is why Islamabad was chosen as the new capital, full stop. That is why Islamabad was chosen as the new capital, full stop. That is why Islamabad was chosen as the new capital, full stop. That is why Islamabad was chosen as the new capital, full stop. Copy करें please. कौन आ रही है? That is why Islamabad was chosen as the new capital. आगे चलते हैं. ये रिपीटेड सवाल है. व्हाट वाज द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अयूब खान? रिपीटेड सवाल अभी हमने पीछे किया है. वी डोंट नीड टू डू इट अगेन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, पेज नंबर 31 पे आ जाए. पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5. गो टू पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5. पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5. कौन आ रही है? जल्दी से आ जाए. पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5. पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5. जुल्फिकार अली भुट्टो भी रिसेंटली आया है, लेकिन डाउनफॉल के आने के चांसेस फिर भी रखता है. तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. Explain why Zulfikar Ali Bhutto's rule ended in 1977. Zulfikar Ali Bhutto का रूल एंडेड हुआ था 1977 में, बहुत सारे रीजंस की वजह से. नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये कि जिया ने कंट्री में मार्शल लॉ लगा दिया था. नंबर 2, नेशनलाइजेशन फेल हो गया था. एजुकेशनल रिफॉर्म फेल हो गए थे जुल्फिकार अली भुट्टो के. जुल्फिकार अली भुट्टो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाया था. देयर वर सो मेनी रीजंस. हाँ, जरा जल्दी से निपटा देते हैं.
जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शंस कराए थे और पीएनए इलेक्शंस हार गया था। और जैसे ही पीएनए इलेक्शंस हारा, पीएनए का इलेक्शन में रिगिंग हुई है और भुट्टो को बोला री इलेक्शन कराओ। भुट्टो ने कहा दिमाग खराब है, मैं री इलेक्शन कराऊंगा। भुट्टो ने मना कर दिया, मैं री इलेक्शन नहीं कराऊंगा। क्योंकि भुट्टो ने मना कर दिया था कि वो री इलेक्शन नहीं करेगा, तो जिया को मौका मिला कंट्री में तीसरा क्या लगाने का, मार्शल लॉ। तो आज ये जरा लिखे अपने पास, जुल्फिकार अली भुट्टो रूल एंडेड इन 1977। लेकिन in 1977 there were elections there were elections between Pakistan People's Party and PNA, full stop. PNA lost the elections, full stop. PNA lost the elections, full stop. They demanded re-elections. PNA lost the elections, full stop. They demanded re-elections. This was rejected by Bhutto. Law and order situation खराब हो गई थी. The law and order situation got worse. Law and order situation क्या हो गई थी? Worse हो गई थी. The law and order situation got worse. The law and order situation got worse. Full stop. PNA ने कहा इलेक्शन में रिगिंग हुई है. PNA said that there has been rigging in the elections. Full stop. तो जिया ने कंट्री में लगा दिया थर्ड मार्शल लॉ. सो जिया imposed the third martial law in the country. So Zia imposed the third martial law in the country. Full stop. तो जिया ने कंट्री में तीसरा क्या लगा दिया? जिया ने कंट्री में तीसरा मार्शल लॉ लगा दिया. As a result of this, Bhutto's government came to an end. As a result of this, Bhutto's government came to an end. इसी वजह से भुट्टो की गवर्नमेंट एंड पे आ गई थी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस भुट्टोज गवर्नमेंट केम टू एन एंड. फुल स्टॉप. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने कर लिया. यहाँ पे पहला रीजन क्या था? भुट्टो की गवर्नमेंट एंड पे क्यों आई थी? भुट्टो की गवर्नमेंट एंड पे क्यों आई थी? तो हमने इसका रीजन बता दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस भुट्टोज गवर्नमेंट केम टू एन एंड. फुल स्टॉप. तो भुट्टो की गवर्नमेंट एंड हो गई थी. सेकेंडली, भुट्टो के रिफॉर्म्स जो थे ना वो फेल हो गए थे. भुट्टो के रिफॉर्म्स क्या हो गए थे? फेल हो गए थे. भुट्टो के रिफॉर्म्स क्या हो गए थे? फेल हो गए थे. लिखे secondly Bhutto's reforms were a failure. Bhutto reforms were a failure. Full stop. He introduced educational reforms. Full stop. Literacy rate was 25%. Full stop. Free primary education was given. Education budget was 13%, but still literacy increased by 1%. Full stop. People started criticizing Bhutto
and this became a reason for downfall. And this became a reason for downfall. इसकी वजह से downfall हुआ. And this became a reason for the downfall. And this became a reason for the downfall. तीसरा रीजन पे आ जाते हैं. भुट्टो ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी. नेशनलाइजेशन का मतलब है जो भी काम करेगी गवर्नमेंट करेगी, जो भी काम करेगी कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी. तो 70 कंपनीज को नेशनलाइज किया था, वो सारी बर्बाद हो गई थी. 70 कंपनीज को नेशनलाइज किया था और सारी क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी. आए जरा लिखिए अपने पास. थर्डली thirdly Thirdly, nationalization policy was a failure. Thirdly, nationalization policy was a failure. Thirdly, nationalization policy was a failure. Full stop. Educated workers were not available. Educated workers were not available. 70 companies were nationalized. They all started making losses. Foreign companies refused to do investment in Pakistan. Bhutto's image was damaged. Bhutto's image was damaged. This led to the downfall. This led to the downfall. Full stop. This led to the downfall. Full stop. इसकी वजह से downfall हुआ. This led to the downfall. Full stop. Con please copy. And this led to the downfall. Full stop. चलो जी, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. That's it for today.